Well, hello everyone. Hope you all are doing very great. And today we are going to do the topic domain of a function, and it is one of the most important topic of the chapter because it is also included in the basics. So we are going to start with the definition and with few of the cases. थोड़े से cases आज discuss करेंगे और थोड़े से next video में. Cool. So moving on to the definition of the domain of a function, if I consider the function y is equals to fx, then the domain means the values of x at which fx is well defined. Means fx should not be infinite, not defined, at that value of, at those values of x, right? So हमें x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसपे fx जो है इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन, और वो सारी की सारी वैल्यूज हट जाएगी जिसपे वो वेल डिफाइंड नहीं है, राइट? सो आई हैव मेड केसेस इन दिस, एंड केसेस के हिसाब से करेंगे तो इट वुड बी लाइक वेरी वेरी इजी फॉर अस to cope up with the topic. So the first case that we are going to do is polynomial function. The basic form of the polynomial function will be something like, if I take the example, then in case of the polynomial function, every time the domain of the function will be x belonging to R. R is the set of real numbers. Case 2 is rational function. As in we know what a rational function p by q की फॉर्म में होते हैं, और इसमें इस पूरे को वेल डिफाइंड अगर होना चाहिए, सो Q should not be equal to 0, right? P हमारा किसी से भी बिलोंग कर सकता है, but Q should not be equal to 0. थर्ड केस पर मूव ऑन अगर हम करते हैं तो थर्ड केस इज ऑफ even number of roots. Even number of roots will be like root 2, root 4 and so on. In these cases the function fx would be greater than equal to 0, and from here we will be finding the domain, like the values of x will be finding from this equation, right? And case 4 will be odd number of roots, right? So in that case also fx should be greater than equal to 0, and then we will find the value of x. Like we cannot have this part, or in roots also this part as iota, like we cannot have it in negative form. So fifth and sixth cases I am just telling the name of the cases, but we'll be doing them in the next video, and they are very very important cases. So case 5 that we'll be doing is of modulus function, how to redefine the modulus function and how to find the domain and how to make the sets. We'll be doing that. And case 6 is smallest integer function, as in like this. When the function is like this, y is equals to smallest integer function fx.
right? So we'll be knowing what this mean actually, what is the meaning of smallest integer function, and how we'll be finding the domain of this kind of function. So moving on to the today's cases, we did polynomial function, rational function, and combining 3 and 4 we did the function which were in roots, right? So the basic thing is we'll be doing and understanding them more with the help of examples. So beginning with the examples, we'll be doing 5 examples today, like 2 will be the questions and 3 will be of the finding domains. So the first I am taking is under root 2x plus 4, right? So the simple thing is that this function is defined at when 2x plus 4 is greater than 0, right? So from here we get the value of x as greater than -2. So the domain is greater than, right? So it will end till infinity, right? So this is the domain of the function. If I move on to the second, like if I take the example of rational functions, then we can have an example like x upon x cube x square plus 3x plus 2. It is in the form of p by q, right? So here we did it in the case that q should not be equal to 0. So since x is in the numerator part, so x will belong to R, but we need to define the range with respect to the denominator. So x square plus 3x plus 2 should be greater than 0. It should not be equal to 0. Why? Because it will become not defined. The function will become not defined if it is equal to 0. So here we need to solve this equation. I am writing it in the upper part. So x square plus 3x plus 2 should be greater than 0. We need to solve this equation. If we do it by middle term splitting, then the factors will be like this. Yep, cool. So it will be like this, right? So this will be our part, should be greater than 0. Rather, we did the function that it should not be equal to 0. We cannot consider being greater than 0, so it should not be equal to 0, right? So if we consider it not equal to 0, only on those terms the value of this function, the function I wrote earlier, is not defined, right? So x should not be equal to -1 and x should not be equal to -2. So the domain of the function x upon x square plus 3x plus 2 is x belongs to R minus, we set having the elements these two, because in every other value of x the function will be defined, right? So moving on to next. Third question that I want to took upon is, this is a kind of NCERT question, so which says find the domain of the function y that is given by such that y is equals to x plus 6 by x, where x and y belongs to n and x is less than 6.
So here we can understand almost every part of the domain is given, but here the domain will be limited. So we need to find the domain of this function where these two conditions are there, right? So what we will be doing, y is equals to x plus 6. First we will be generally finding the domain, how as in we did in the previous section. So it will be like x square plus 6 upon x. So according to this, the domain of the function will be x not equal to 0. So the domain actually will be x belonging to R minus 0, right? But as per the conditions that are being given, from here we came to know that x belongs to the natural number, so x will be greater than 0 and x will be less than 6. So as per this, our domain is 0, 6, and 6 can be a part of it. No, 6 cannot be a part of it as per this. So and 0 cannot be a part of it because 0 से तो not define ही हो जाएगा. So the domain of the function is 0, 6. As in we can see 1 पर भी ये चीज़ defined है, 2, 3, 4, 5, even 6 पर भी defined है, but the thing is that here we are given this condition, so the domain of the function is 0, 6, right? पहले नॉर्मली हमें डोमेन निकालनी है एंड उसके बाद वी नीड टू सी दैट व्हाट आर द कंडीशंस गिवन, और उन कंडीशंस के हिसाब से वी कैन एडजस्ट आवर प्रीवियस डोमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू पुट अपॉन यू पीपल इज फाइंड द डोमेन फॉर विच fx is equals to gx where fx is 2x square plus 2x square, take it as minus 1, and gx is equals to 1 minus 3x, right? So first of all we need to consider this condition and then we can find the domain, right? So solution will be like, we are considering fx is equals to gx, so 2x square minus 1 is equals to 1 minus 3x. We are having a quadratic equation that says this, right? That says this. So what we need to do now is that we need to find the values of x at which this is 0. So this is a simple question of solving a quadratic equation because we need to find the solutions or simply saying roots of this equation, because at those value of x only, if we will put those values in these two functions, then only these two functions will be equal. Agree? So the simple part is we need to solve this equation. Cool. So we can simply apply the formula of minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a, and we can solve it like that. So we will be having the required answers, right? This is an NCERT question. We can like solve it out ourselves, but the logic that I wanted to explain is that कि इस question में हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज डोमेन नहीं निकालनी है. वी नीड टू फाइंड द डोमेन सच दैट बोथ द फंक्शंस गेट्स द इक्वल वैल्यू इन रिजल्ट्स. fx और gx को इक्वल कराना था. सो कोई ऐसी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली द वैल्यूज ऑफ x दैट विल बी गेटिंग, इफ वी पुट दोज वैल्यूज हियर we'll be getting this as equal, because हमने actually इस equation को ये बनाकर solve किया था, right? Last one will be the easier one. I'll be taking one more question on domain. This one, not that easier, but will really help you out.
y is equals to under root x plus 1 plus 1 upon under root x minus 1. See, this is one of the most important question NCERTs में भी ये question like NCERT exemplar में you will get this question. So एक simple तरीका है इसको करने का. सी ये वाला हमारा एक केस था और ये वाला हमारा p बाई क्यू वाली फॉर्म का एक केस था, राइट. सो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे. इस वाले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो इट्स लाइक x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अग्री. x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1. सो इधर से जो मेरे पास डोमेन निकल के आई वो आई मेरे पास इधर से जो मेरे पास लाइक वी आर नॉट वी विल बी फाइंडिंग द टोटल डोमेन राइट नाउ. वी आर जस्ट कंसिडरिंग दिस पार्ट. एक्चुअली दिस इज द डोमेन इटसेल्फ फॉर केस ए. वी आर कंसिडरिंग केस ए. केस बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर p बाई क्यू की फॉर्म में है तो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बट अंडर रूट में भी है. अंडर रूट में भी है. सो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट. सो x विल बी ग्रेटर देन 1. ये हमारी सेकेंड पार्ट की डोमेन आ गई. बट द थिंग इज कि जब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें दो केसेस हैं, हमने अलग अलग किए थे और उसको कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है, तो जो इंटरसेक्शन होता है ना डोमेन का, जो कॉमन पार्ट होता है डोमेन का, दैट इज बीइंग कंसिडर्ड. और ये मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगी. ग्राफिकली हम लोग इसको समझते हैं. एक बार प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर. ये मेरे पास -1 है, ये 0 है, ये 1 है, राइट. इस वाली डोमेन को अगर मैं पुट अप कर रही हूँ इट विल बी ग्रेटर देन 1. सो ये वाला पॉइंट कंसिडर होगा. तो ये वाला जो पूरा पार्ट है टिल इंफिनिटी considering the point -1 is the domain of first case, if I write A, and the domain of second case, the case B, will be from here. Why I am making it the empty circle, you know the reason, because यहाँ equal to का साइन नहीं है. और इसके आगे का जो सारा का सारा पार्ट है that is the domain of second function. So इस पूरे के पूरे में हमारा कॉमन रीजन क्या आ रहा है? कॉमन रीजन मेरा जो आ रहा है वो ये आ रहा है ये वाला, बिकॉज इस वाली पार्ट पर ये भी है और सेकेंड वाले की भी फुलफिल हो गई. मतलब ए और बी दोनों की कंडीशंस फुलफिल हो गई है. सो इस वाले पार्ट में हमारा पूरा का पूरा कंसिडर हो रहा है विदाउट कंसिडरिंग द पॉइंट 1, बिकॉज 1 अगर हमने पॉइंट कंसिडर किया तो ये फुलफिल नहीं हो पाएगा. और इवन हम लोग देख भी सकते हैं ना कि ये वाला पार्ट तो हम ले ही नहीं सकते. अगर मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया तो यहाँ अंडर रूट में -1 आ जाएगा, तो वो भी हमारा जो वेल डिफाइंड की कंडीशन है डोमेन निकालने के लिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए हमारा जो फंक्शन है, वो भी करेक्ट प्रूव हो जाएगी. सो दिस वन इज द कॉमन रीजन. 1 भी हम किस लिए कंसिडर नहीं कर सकते, यहाँ पे हम 1 डाल रहे हैं, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो इट विल बी नॉट डिफाइंड, राइट. सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 till infinity, positive infinity. So this was all for domain part, right. In the next video we'll be doing 2 more cases of the domain part and hope जितना आज समझाया वो बहुत अच्छे से समझ आ गया and you need to practice few more questions.